Hi everyone. Hi everyone. We're back, And today we are making some Shami Kababs. so this is my mom's recipe. I've written it in really poor handwriting here, but basically these, like, my mom makes these a lot, like literally all the time. We've been having them since we were like in like 8th grade. Mom's working there. Yeah, अम्मा आप नहीं हो हम शायद जाएंगे. So since this is such a staple in like my house and so many people have tried it, I feel like we have a lot to live up to this time. And like, yeah, I hope that my mom likes it and our friends like it. So yeah, we should start now. Our workspace looks lit. That's our little GoPro right there. This is what we do on breaks. Then I was taking out some halim from my fridge, and she's so excited. The halim, are you enjoying it? I made it really spicy. Manal just creates work for herself and then doesn't achieve the goal she set. Shut up. Are you tired, Manal? So we're gonna check if it's done now. अभी नहीं हुआ. अभी नहीं हुआ. तो आंटी अंदाज़न कितना टाइम? 15-20 मिनट तो हैं. नहीं. Where are you? Here. Oh shit, Manal, it looks really heavy. दरवाजा खोलो. Manal, are you sure you won't drop it on your foot? So we're gonna use this, and we're not gonna use the machine. So yeah, good luck to us. So we decided to go traditional and take the harder way. And Like I feel like I'm doing it wrong. Like in my heart of hearts, I know it's wrong. You know. it's okay, we'll figure it out. अब आप देखेंगे ऐसे श्रेड हो रहा है ना. अब आप ऐसे करें और ये बहुत देर में होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा. हाँ बिल्कुल सही फैला ये. You need rhythm for this. This is almost like my nanny's, which is a really big compliment. Yeah, it's like my nanny's. मैं बताऊंगा जब. ये डालूंगी मैं, तुम देखना. It is good. It's good. Promise. Rate it out of 10. 10. Really? Wow. Thank you, Subha. कलर तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही फ्राई हुए हुए. वाओ, जो ये आप लोगों ने सिल पे पीसा है ना, वेरी नाइस. देखें इसके अंदर कैसा रेशे रेशे आ रहे हैं. वेरी नाइस. वैसे जैसे शामी कबाब होने चाहिए, आप लोगों ने जो जैसे बनाने की कोशिश की थी वैसे ही बिल्कुल बने हैं, जो ओरिजिनल हमारे ट्रेडिशनल होते हैं. इसमें बस थोड़ा सा नमक कम है,
जो ज़ैनब बार बार बोल रही थी मनाल को कि मुझे कम लग रहा है, लेकिन इन लोगों को आइडिया नहीं हो रहा था। तो बहुत अच्छे बने हैं वैसे, फर्स्ट क्लास। स्पाइसी तो नहीं है सुबुल कह रही थी? नहीं, सुबुल के लिहाज से सुबुल छोटी हैं तो ऑब्वियसली उनको स्पाइसी लग रहे होंगे, Rated out मुझे नहीं of 10, लगे। थोड़ा सा नमक होता 10 out of 10 Really? क्योंकि इसके अंदर इतनी मेहनत आप लोगों ने पीसने में की है और वो इतना अच्छा पीसा है। अगर वो सही नहीं पिसता, दाल मुंह में आ रही होती या कोई बोटी आ रही होती तो वो तो सारा फ्लॉप हो जाता आपका। वेरी नाइस। Thank you.